नमस्ते बिटिया, हमेशा खुश रहिए। माई सेल्फ जीवन मिस्टर केवल नागर, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेटनरी साइंस एंड मेथोडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। I welcome to all of you in my digital class. Student, I will prepare this lecture class for BSc Agriculture Honors section, which my subject post harvest management and value addition of fruit and vegetables. Students, we will discuss about pre-harvest factors and affecting post-harvest. These are discussed. पोस्ट हार्वेस्ट के अंदर बताया जा रहा है कि क्वालिटी ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट प्रोडक्ट्स, क्वालिटी दिया डिस्कशन। पोस्ट हार्वेस्ट क्वालिटी रिप्रेजेंट मार्केटिंग क्वालिटी, एडिबल क्वालिटी, ट्रांसपोर्ट क्वालिटी, टेबल क्वालिटी, न्यूट्रिशन क्वालिटी, इंटरनल क्वालिटी एंड appearance quality. These are several quality of product are included in post-harvest products. These are quality means a combination of characteristics, attribute and property that give the values to humans and enjoyments. Consumption considers good quality in relation to color, flavors and nutrition. Quality of the produce, the final manifestations in interrelation between the commodity and its environments. The genetic characters and physiology status of the commodity determine the typical post-harvest behaviors and quality of the produce, and these two are major basis of interactions. Pre-harvest factors, that is environmental factors such as temperature, relative humidity, water potential, high light, culture practice and pest management techniques determine the inherent quality of the produce. However, the ultimate quality is the final manifestations of interrelation between the commodity and its environments. There are several pre-harvest factors and post-harvest factors affect the quality of horticulture crops. Some of these factors are related to plants, others related to environment or cultural practice. There are first point discuss pre-harvest factors. Mean first point related to plants, which related to plant discuss crops. First, crops. Quality of fruits and vegetables are the varies from crops to crops. Example: jackfruits, bell, tomato, onion, pumpkin, garlic, etc. having good quality in relation to shelf life. While apple, mango, cherry, strawberry, tomato, capsicum, okra, Brussels sprout, Chinese cabbage, carrot, radish attract more to consumers due to their attractive appearance. The second discuss cultivars. The quality of seeds or plant material is an important factor that control the quality of fruits and vegetable products. Several parameters of quality are controlled genetically. Third, culture practice. Our culture practice have direct effect on the final quality to the produce. Fourth, planting periods. Which fourth point, planting periods. These factors, many plants are very sensitive to environment conditions, and thus quality will not optimize when crop is produced under the adverse condition. Producing summer plants during in the plant or vice versa will not be appropriate unless protection practices are implemented. Final, planting tendency. जो फिफ्थ पॉइंट है, प्लांटिंग टेंडेंसी, planting density.
It affect both the quality and quantity and the quality of the produce. High tendency planting increasing competition between plant reduce light availability and thus my decrease quantity. Low density planting lead to large size better colored fruit or vegetable which might have short shelf life. Large fruit are the commonly more sensitive to physiological disorders. इरिगेशन, जो इरिगेशन होता है इसमें हम डिस्कस करते हैं कि इरिगेशन वाटरिंग यूजली reduce fruit size, increasing splitting, physiological disorder, reduce water content in plant or plant parts, etc. Fertilizers, poor management of fertilizer will increasing physiological disorder due to deficiency of some minerals to increase of other leading to toxicity. In both cases, quality will be negatively affected. Then the pruning, it reduces the load in increasing the growth of fruits and chemicals used after harvest. Like discuss next, thinning. This operation reduction reduces the competition between fruits or plants and thus promotes a good balance between vegetative and the fruit parts and improve qualities. Next, protection. Pathogens and insects have a very negative effect on quality. Poor management of plants protection programs can lead to very poor quality and reduced yields. बी पॉइंट के अंदर आ रहा है रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, जो फर्स्ट पॉइंट में रिलेटेड टू प्लांट से था, क्रॉप का रिलेटेड टू प्लांट. इसके बाद सेकंड पॉइंट में बी जो रिलेटेड टू इन्वायरमेंट से, इसके अंदर टेम्परेचर के अंदर इसका जो हाई और लो टेम्परेचर के अंदर उसको इंक्लूड किया जा रहा है. टेम्परेचर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंट फैक्टर that the effect quality. Very low and very high temperature might injure sensitive crops. It could high intensity and the quality is the important for the formation of some colors. Wind and rain might causes negative effect on some crops. सी पॉइंट्स में आए हम डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू केमिकल्स. जो रिलेटेड टू केमिकल्स के अंदर हम डिस्कस करते हैं, many hormones and growth regulators are used in agriculture and they can affect quality in different ways. इसके अंदर और हम डिस्कस ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस अपना यही है, जो थ्री फैक्टर अफेक्टिंग जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर हम इफ़ेक्ट करता है. इसके बाद में और हम डिस्कस करते हैं मोटा पॉइंट टू पॉइंट इसके अंदर करते हैं, जैसे कि ड्यूरिंग दी हार्वेस्ट फैक्टर्स. फर्स्ट पॉइंट में आता है सीजन्स, सेकंड पॉइंट में टाइम, फोर्थ में आता है मेथड ऑफ हार्वेस्ट, स्टेज ऑफ हार्वेस्टिंग. इसके बाद कंज्यूमर डिमांड के अंदर इसी में पॉइंट है. सी पॉइंट में आता है पोस्ट हार्वेस्ट फैक्टर के अंदर क्यूरिंग मीन्स डेफिनेशन क्यूरिंग डन इमीडिएटली आफ्टर हार्वेस्ट. हार्वेस्टिंग के जो बाद में हम जब क्यूरिंग करते हैं, हीट एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं, उसको जैसे जो स्किन होती है उसको अच्छे से उसको सनलाइट के थ्रू उसको हाई टेम्परेचर में उसे ट्रीटमेंट करते हैं. इस क्यूरिंग द प्रोसेस इज द इंड्यूस द रिलेटेड द हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी. इसके बाद में डिग्रीनिंग, इसके बाद प्री कूलिंग, इसके बाद में आ रहा है अपना नेक्स्ट पॉइंट वॉशिंग एंड ड्राइंग, और इसके बाद सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, डिसइंफेक्शंस, वैक्सीन, पैकेजिंग, डिलीवरी. आज सब्सक्राइब. थैंक यू so much.